भी लोगों आसानी से. I just saw the film. Thank you. What was the first reaction in the moment Neeraj Pandey approached you for the film? Neeraj and me, we are all like now become very close friends. So we keep sharing our passion for films, passion for all the everything that we see on digitally or on the screen. For this one, he kind of just asked me that, will you be open to do a short film? I said, yes, let's go ahead and do it. And the idea that he bounced it off to me, I found it really interesting. Because since a long time, I wanted to do something on extramarital, because I really think that so many things can be done and so many things are done in the West, and we are still shying away from it. As a country, we should, and as an industry, we should really get into really churn out some stories where we can talk about a very large phenomenon which is called extramarital. अभी तक हमने किया नहीं. So this film is like a baby step, but it's a huge achievement for all of us, for me and Pooja and Neeraj, to be part of it and to say the story in such a way where it communicates the pain and the irony of it, both. So that's why I think this is an amazing feeling that that I'm having right now, because the reaction that I could hear inside. It's not only about humor; it's the irony, it's the pain that both the characters are going through, and this is what happens in that kind of a situation. पूजा जिस तरह का रिस्पॉन्स अंदर मिला, आप दोनों स्टेज पे आए थे और हम सब वहाँ मौजूद थे, हमने बहुत एंजॉय किया. काफी नर्वस भी लग रही थी आप. Do you think the battle is gone once it is liked by everyone? You can feel that everyone likes it. Yeah, I don't think I'm waging any battle here, but definitely I would really want, and my wish is for everybody to like it and for me to do more kind of films and work like this with amazing people like Neeraj Pandey and Manoj Bajpayee himself. So this is just the beginning. It's no battle is won yet. Okay, Neeraj Pandey and Manoj Bajpayee, are you nervous the moment you keep you'll be directed by Neeraj Pandey, you'll be working with actor like Manoj Bajpayee? Very good. I couldn't have asked for more. I think more than nervous, I was very excited. Because yes, I have been waiting for a good opportunity, and I really wanted to make the most of it. I didn't want to leave any stone unturned to make sure that in every aspect I do my best, and I think that's exactly what I've tried. मनोज सर, कृति के बाद ये दूसरी फिल्म है, मतलब कह सकते हैं कि आपको शॉर्ट फिल्म में एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा कुछ मिलता है और ज़्यादा एंजॉय करते हैं आप. This is my third one. I'm from Tandav, Kriti and the Ouch. आप देखिए, शॉर्ट फिल्म में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप सोचते हैं और एक दिन में शूटिंग करते हैं और इमीडिएटली जो है पोस्ट प्रोडक्शन भी हो जाता है और इंस्टेंट रिएक्शन आपको लोगों से मिलना शुरू हो जाता है. एंड डिजिटल वर्ल्ड जो है इतना वास्ट प्लेटफॉर्म हो चुका है कि आपका काम जो है वो रोमानिया में भी लोग देख रहे हैं और मेरे गांव में भी देख रहे हैं, हर जगह. ये अभी क्या है कि खास करके ऐसे दौर में जहां पर थिएटर हॉल्स बंद हो रहे हैं वैसे, और हम लोग इंडस्ट्री वाले रो रहे हैं कि और थिएटर हॉल बनने चाहिए, ऐसे समय में डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है हमारे फ्यूचर में. और ये जो शॉर्ट फिल्में हैं, चाहे कृति हो चाहे तांडव है, नाउ आउच आई एम वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट दैट दिस इज going to go on a very long journey. So these works are proving that there is an audience out there. They want to see something very different, something that you can't even think of trying out for a larger format, which you can do it on a shorter format, and you are through with it immediately. And one more thing that you've done, one more feather is added to you. So it's all in all, it's a win-win situation for an actor, for a director, for a cameraman, for everybody. So that is why I think short film is a platform that I will not be giving up so easily. It's a platform that I'm addicted to now. And let me clarify one thing, that we don't get paid for short films. We do it for the sheer passion of it. That's it. कभी आपको आउट कहना पड़ा है? यही आपको उसका दिया मैंने.
अभी तक हुआ नहीं, आउच कहना पड़ेगा सर, तो मेरी बीवी ऐसी है कि मुझे डिवोर्स करके चली जाएगी। Ouch moment? No, not really. No. अभी इसको शादी तो करने दो पहले। मुझे इसके अलावा हम लोग आपको बड़े पर्दे पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो लेकिन छोटे पर्दे पर ये कैसे डिसाइड किया और मतलब कैसे आया ये आपका? कोई डिसीजन, कॉन्शियस डिसीजन तो था नहीं, बट ऑफ कोर्स इफ नीरज पांडे calls you and tells you that he's written a story and he wants to do a short film and it's his first short film and the Manoj Pandey is in it, there is no Manoj way. Pandey. Sorry. Neeraj sir influence. So there was no way I could not. and Manoj Pandey. See, that is how nervous I am and excited too. इससे ज़्यादा proof नहीं हो सकता कि I'm still. इंशाल्लाह, मतलब इससे बेटर और क्या हो सकता है मेरे लिए. It'll be a dream come true. Like I think more than a dream. Let me tell you, I mean, Neeraj Pandey has directed it, and she is the main lead in it. And this is just the beginning for her. I mean, she's done such a superb job in the film, and everybody, whoever is watching it, somewhere agree with me now that Pooja has been really fantastic in the film. So this is just the beginning for her. I mean, and with this kind of a reaction, with this kind of a response, she's meant for a long haul here. Pooja, what you have learned from Manoj Bhate while working with him? A lot of things. In fact, I was quite inhibited when Neeraj sir told me कि Manoj Bajpayee will be opposite you. I was like, for like 2 seconds, I was like this. I was like, अच्छा. और जब नीरज सर ने फिल्म के लिए बोला था, I was excited. But when I came to know it's him, I was nervous. But throughout that one day working with him, I think though I've barely done a few films, he is the best co-star. He remained a very, very special one. He babied me on the set, pampered me on the set, made sure I did things right, encouraged me, motivated me, which he's still doing, and I totally love him. And of course, I've been an ardent admirer and a fan of him as well. Thank you. आपने क्या सिखाया कि ये ध्यान से? See, what is great about Pooja, that she's very, very confident and she believes in her dream. Because I meet many of the newcomers out there. I conduct workshops sometime in many of the institutes, just for the sake of it. Just because I like to share my experience with everybody. So most of the time, people have a dream, but somewhere it is based on some kind of illusion about themselves. But Pooja really knows her strength and weaknesses, and then she has a belief in herself. If your belief and your dreams are based on the reality about you, then it's achievable. If you are pampering a myth about yourself, if you're pampering an illusion about yourself, then it becomes very, very difficult. But what is so great about her, that she knows her weakness, she knows her strength, and then she's brave enough to face all of those things, and then she's willing to achieve many more things. So that way she will keep correcting herself and keep achieving new milestone after milestone. Because none of us here, no actor is perfect, no creative person is perfect. It's all about knowing yourself, knowing your strength, knowing your weaknesses. If you have that much of courage, then you go very far. And Pooja has all of that. हेलो भाई, पूछ लो प्रभु शॉर्ट फिल्म्स आपके लिए नई तो नहीं है, लेकिन जब इस विधा में आप आते हैं और इस तरीके का नामांकन होता है, नीरज की स्क्रिप्ट वगैरह होती है, तो यहाँ पे क्या सोच होती है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा शेयर करेंगे? मैं आपको सही बताऊं, चाहे मैं बिगर फॉर्मेट में हूँ, चाहे मैं थिएटर करता हूँ, चाहे मैं सीरीज करता हूँ, चाहे मैं शॉर्ट फिल्म करता हूँ, आई एम इन दिस सिटी फॉर द पैशन ऑफ इट. The money that I'm paid for bigger format or for anything that I do outside, that's a default for me. But I'm into this profession only for the passion of it, and I'm just too much in love with this craft called acting. I really feel that it's the most difficult thing, because
the day you think that you are better, the next story challenges you much more, and then you start doubting about your own craft. So this is the beauty of it that I'm really in love with. So शॉर्ट फिल्म करते हुए मेरा और कुछ नहीं होता, मुझे ये लगता है कि नाउ एक और चीज़ मिली, एक और चैलेंज मिला और इसको मुझे अच्छे से अच्छा करना है, बिकॉज ये कई सालों तक रहने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे। तो मेरी परफॉर्मेंस या ये जो फिल्म जो मैं कर रहा हूँ ये सालों साल जिंदा रहनी चाहिए। आज से एक जनरेशन बाद भी अगर देखा जाएगा डिजिटली तो एवरीबडी शुड रिलेट टू माई परफॉर्मेंस, एवरीबडी शुड रिलेट टू द फिल्म दैट आई एम पार्ट ऑफ। सो दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज। सर सुबह के सेशन में बात हो रही थी कि सत्या जब फिल्म आई थी तो उसने हर तरीके की फिल्मों के जो टिपिकल फिल्में बनती थी उनको एक अलग तरीके से पहले वो फिल्म बनी थी। और तो सत्या फिल्म आपके दिल के कितने करीब और वो भिक्षु महात्रे का किरदार है? अरे सत्या मेरे ख्याल से इसने मुझे एक करियर दिया और जिसके कारण मैं आज आप लोगों के साथ सामने बैठा हूँ। सत्या ही कारण है, लेकिन उसके अलावा मैं कहूँगा कि राम गोपाल वर्मा की सत्या इसने बहुत सारे न सिर्फ करियर को बनाया बल्कि बहुत सारे फिल्म मेकर को साहस दिया कि वो फिल्म मेकर बनने का सोचें। उस इंडस्ट्री में जहाँ पर अगर 90s का पूरा दौर आपको याद हो, वहाँ पर हमारे तरीके के एक्टरों की कहीं से कोई जगह ही नहीं थी और नए तरीके के डायरेक्टर्स जो आजकल बहुत सक्सेसफुल हैं, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे इम्तियाज़ हो, चाहे विशाल हो, मेरा अपना मानना है कि सत्या हैज़ पेव्ड अ वे फॉर ऑल ऑफ दीज फिल्म मेकर्स। सर अभी राम गोपाल वर्मा का जिक्र हुआ तो उनकी अगली फिल्म में भी अभी शुरू हो गई है। जी जी थोड़ा बहुत जिक्र करें। जी सरकार थी में रामू ने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस फिल्म में काम करो और ख़ास करके उस समय में राम गोपाल वर्मा ने मुझे फ़ोन किया। जब जाहिर सी बात है जब उन्होंने फ़ोन किया इसका मतलब कि उनको लगा कि मनोज बाजपेयी को होना चाहिए, मनोज बाजपेयी की ज़रूरत है वहाँ पे। तो जिस व्यक्ति ने मेरा करियर बनाया है उसको ऐसे मोमेंट में ना करना मेरे लिए हो ही नहीं सकता था। आज मैं राम गोपाल वर्मा के साथ आज से नहीं, जब से सत्या किया तब से मैं खड़ा हूँ और आगे भी खड़े रहेंगे। जब जब राम गोपाल वर्मा जी बुलाएंगे तब तक वहाँ रहेंगे। मैं ऐसा कोई बड़ा रोल नहीं है, लेकिन जितना भी है बहुत दमदार बनेगा क्योंकि रामू और मैं आई मीन वी वर्क वेरी वेल टुगेदर। मैम जब आप फ्रेम शेयर कर रहे थे, हमने भी नीचे फिल्म देखी जस्ट, तो एक फ्रेम में जब आपके सामने मनोज बाजपेयी हो तो किस तरीके की सोच थी, क्योंकि ये कुछ चाह रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, आप फ्रेम से चले जा रहे। So exactly that was the challenge to hold my own. So I think सबसे बड़ा challenge वही था because he was in a completely different space and I had to be in a completely different space. So as a newcomer, as someone who's barely done 1 or 2 films, it was very difficult, especially when you have someone like him. So that was a challenge. But I think that's when our director comes into picture and the confidence, the little confidence that I have and the passion and all of that. And of course, he made me feel comfortable. So. अपकमिंग्स के बारे में सर थोड़ा सा जी मिसिंग आएगी। मैं इस साल जो है बहुत ही कमाल का साल रहा है मेरा। आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ सच ग्रेट फिल्म। नाउ अगले साल की शुरुआत